So if we come to the non-technical part, so एक क्वेश्चन था, like we both being an engineer, me and Sarth being an engineer, so हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज उतना कुछ होता नहीं, लाइक इन द 4 years ऑफ इंजीनियरिंग होता है भाई, प्रैक्टिकल होता है। नॉलेज तूने नहीं किया, उतना मैंने नहीं किया है। होता भाई, उतना नहीं होता भाई जो जो हम ऐसा चाहते हैं। बट डेंटल में इट इज नेसेसरी, राइट? द या प्रैक्टिकल स्टफ यू डू। सो डेफिनेटली। स्टार्टिंग में कैसे करते, लेकिन डमी गेस्ट आके बुलाता है, चलो मुझे कर अभी, वैसा टाइप, या हाउ इज अ? सी, दिस वाज माय बड़ी यार, ये इसके साथ नहीं तो नहीं, साला स्कैम अपार्ट हो फ्रॉम गया। दैट, या एक्सक्लूडिंग दैट, लाइक वो डमी तो ठीक है, लाइक इन ह्यूमन, लाइक विद पर्सन व्हाइल यू ओके। आर इंटरेक्टिंग, या वो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा ना, कि भाई इफ ही ऐड सम प्रेशर और any parameters will include, like will add on Yeah, parameters something like when. he is asking you basically, here you are carefree and you can do anything what you want with हाँ, that dummy part. But when a dummy Correct, dummy, real person arrives, like there are vitals. So, हाँ, हाँ. So he's asking या about that या experience. Yeah. like बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है एक्चुअली, okay, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, देयर इज ओएस फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन इज तो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ टेरर, बट देन देयर hmm, वाज समथिंग आई वाज गुड एट, आई एम गुड एट एंडोडोंटिक्स basically, which is root canals and filling those cavities and that kind of stuff. The thing is, with this, when you open this is बाप the रे, हाँ, lower jaw, or this jaw, and this is the upper jaw, right? हाँ, So when I'm practicing with this, I have the machine, right? The drilling machine. I can practice, I can look like this. I can just, Yeah, make a yeah, cavity. अंदर Thing is, इतना in a तो खोल नहीं patient, you सकता, can't लेकिन make the हाँ, patient open his mouth yeah. उतना रे. So हाँ, when he's sitting and he sits in वो आराम से बैठता है, उसके हिसाब से बैठता है वो, and हाँ, he doesn't want to feel stressed. उसको बस वो बैठता है, मुंह खोलता है, बोलता है अपना काम करो, मुझे छोड़ दो बाद में. Hmm. हाँ, So when I had my first patient, I remember it was so daunting क्योंकि उसका upper वाला मतलब maxillary ओ teeth बोलते दिस हैं वन, ओके, हाँ, हाँ, this हाँ, one. Accessibility का तो झोल मतलब वो तो था ही. The thing is, हम्म, how do you take your machine inside and how do you do it? Because you can't really expand his mouth like that, na? हाँ, So the thing is, how we dentists do it is we have a mouth mirror. So it's हाँ, Yeah. inverted टू vision. ऐसा, I हाँ, see the mirror and I'm doing whatever I see in the mirror. हाँ, उल्टा देख के करता हूँ मैं. Hmm. हाँ, मतलब I don't do that. Everyone does that. So Hmm. that was very अंडरस्टूड, daunting. मतलब ओके, साला लगता था कि कभी वो चला जाएगा बाद में, वो इफ द ड्रिलिंग मशीन गोज इनटू द चीक तो क्या हो जाएगा यार, Hmm. हाँ, हाँ, इट द होल चीक, पेशेंट तो तो चिल्लाएगा, मेरे पे भी केस हो जाएगा. बट देन कभी दैट हुआ है, वाज लाइक वेरी, देयर इज अ कभी, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग यार. बट अच्छा तो बहुत, हुआ है, आई वाज वेरी टेरिफाइड. सो सो दैट ओके, वाज ओके, बिकॉज देयर हैव बीन केसेस, मतलब एक्सट्रैक्शंस अब करते हैं ना, सो हम्म, एक्सट्रैक्शंस कांट बी डन वैसे ही, मतलब नॉर्मली नहीं करते, उसको पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. हम्म, देयर हैव बीन किड्स इन आवर डिपार्टमेंट जिन्होंने जब फर्स्ट टाइम किया, दे कॉज्ड अ फ्यू कॉम्प्लिकेशंस, लाइक ओ, इंजेक्शन अगर आप नर्व में देते हो या फिर मसल में देते हो, सॉरी नर्व में, आर्टरी में देते हो या फिर मसल में देते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब व्हाइल यू आर एनेस्थेटाइजिंग दिस जॉ, यहाँ पे यू हैव टू गिव योर इंजेक्शन, यहाँ से पीछे अंदर से देते हैं, मतलब ऑब्वियसली. तो जब हम्म, देते हैं ना, तो इफ यू गो इनटू द मसल, इट कॉजेस समथिंग विच इज कॉल्ड एज ट्रिस्मस. ये बहुत लोगों ने हमारे इधर किया हुआ है. इट्स कॉल्ड एज सॉरी, लॉक जॉ, बंद हो व्हाट्स द जाता वर्ड? है, हाँ, हाँ, हाँ. खुला रहता है. क्रिसमस, ट्रिस्मस, ट्री ट्रिस, ट्री ओके, ट्री ट्री, ट्रिस्मस, ओके, ओके, क्रिसमस, ओके, हाँ, क्रिसमस ऐसे खुला रहता है या फिर ऐसे फॉल्स, बंद नहीं होता, फॉल्स, उसको कुछ कर ही नहीं पाता. ओके, इज Paralyzed type. ऑब्वियसली, Hmm. आई मीन इट कैन बी रिवर्स्ड, जब लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट निकल जाता है तो वो भी निकल जाता है, बट स्टिल हम्म, अ बिट स्कैरी ना. Hmm. या, वो एक हुआ था, फिर एक जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है वो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि वहां पे ना तू वेसल हिट करने का प्रोबेबिलिटी बहुत, सो दैट कॉजेज ओके, समथिंग विच इज कॉल्ड एज हिमेटोमा. या फिर हम्म, द ब्लड विच इज देयर, इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल, और पूरा ओ, ऐसे जम जाता है, पूरा भर जाता है, एंड दैट इज Clot, वेरी वेरी clot सारखा होता म्हणजे. डेंजरस. क्लॉट, सॉर्ट ऑफ क्लॉट. Hmm. सो वैसे हो जाता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट वी वर टोल्ड, एंड पूरा ऐसे हेड फर्स्ट हमको भेज दिया था कि भाई करो तुम लोग जो करने का है, क्योंकि हम्म, अनलेस यू टेक अ लीप यू कांट स्टार्ट, राइट? या, स्टार्ट करना ही पड़ता है. हम्म, सो या दैट वाज वेरी डॉन्टिंग. बाकी के प्रोसीजर्स आर स्टिल वेरी इजी. तीस टू बिकॉज आर, यू आर ऑपरेटिंग ऑन रियल पर्सन, लाइक उसको फीलिंग या रहेगा या या यू आर ऑपरेटिंग, Hmm. so कुछ रहेगा complications. And the other part is, how do dentists react to that when you're operating, the patient goes that hand thing, हाँ भाई, like सम पेशेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड सम आर जस्ट अ मेनेस यार, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है.
like इधर बिकॉज दे ड्रिल हो हैव रहा है उधर ही करेंगे ऐसा टाइप लाइक हाँ टंग। एग्जैक्टली मतलब आई एम ड्रिलिंग देयर तो सारा वही पे वो टंग लगाएगा, मतलब हाँ सर सो आपका टंग कट गया ना तो आप बोल भी नहीं पाओगे बाद में। so what's your reactions like अगर ऐसा हुआ तो how do you solve it like You just know, calm yourself? I never thought I would do this, but I usually scold the patients, and it works. It really Okay. works, yeah. मतलब हाँ. they are already in. They don't know that we are practicing, dentists. They're practicing like students. They feel we हम्म. are dentists because they've come to a dental school. They know this is हाँ. a hospital because ours is a hospital as well, no? So we practice Okay. there. हाँ. They know, but the staff knows we know, but they don't know. So they are a Okay. little already a bit hesitant to speak back to us. They'll only speak if we cause some major trauma, but otherwise they are a bit afraid. So when we scold them, then that really they are taken aback. फिर थोड़ी देर के लिए चुप बैठेंगे, फिर हम्म. शायद थोड़ी देर बाद और करेंगे तो we scold them a little more. फिर भी हाँ. फिर तो हम उसको डराते हैं, अब तो आपका टंग मतलब कट ही जाएगा सर। अच्छा फिर वो अच्छा. डर जाता है, फिर देन ही इज अ बिट वो कॉन्शियसली फिर वो हम्म. ये कर प्रिवेंट करता है टंग को। बट देन अगेन वी हैव टू लिटरली बैक इट विद अ मिरर, मिरर से उसका टंग ऐसे होल्ड करके रखते हैं एंड देन वी डू। Okay. ऑप्शन And वैसे one होते नहीं है। one problem with me or from patient side is when the mouth is open at that time only the doctors ask random questions just to deviate from our mind that we are operating. या वो दैट बहुत इज फॉर ऐसा द इरिटेट होता है पेशेंट्स। कि भाई मैं आंसर कैसे करूँ ऐसा करके लाइक दैट वन. इट्स नो पॉइंट, मतलब तू अगर नहीं जवाब देगा ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर। Yeah, but वो जस्ट being a ऐसे patient, we feel to answer like वो या कैसे. आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम रियलाइजिंग दिस फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कितना वियर्ड है वो। बट हाँ आई लाइक. आल्सो डू दैट, सो आई एम व्हाट कैन आई से यार। और मतलब वो तो सिर्फ आई थिंक समवेयर इनसाइड इट आल्सो रिलैक्सेस मी कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अच्छा आई okay आई from the थिंक सो। doctor side to calm yourself. Okay, cool. या I mean I know I'm doing something, but आई हाँ. थिंक वो इतना हैबिट बन गया कि अब मैं सर में सवाल नहीं करूंगा ना तो फिर मुझे टेंशन आ जाएगी। मैं सवाल तो Okay. करूंगा ही, ऐसे हो। इट्स लाइक अ स्मॉल मीटअप की, लाइक अ स्मॉल फ्रेंडशिप भी बन जाता है पेशेंट के साथ. फ्रेंडशिप तो बनता है, सम पेशेंट्स एक्चुअली लाइक दैट फिर या. वो सेकंड टाइम आएंगे तो मतलब वी डील विद पेशेंट्स सो मच कि याद नहीं रहता एक्चुअली। देयर आर सम पेशेंट डॉक्टर्स हु आर रियली गिफ्टेड, उनको सब याद रहता है। आई टेल यू आई हैव रियली फक्ड अप मेमोरी यार। बट फिर भी मतलब when I talk to patients, I get calls from patients who have given appointments such, after months after that, and they tell me कि डॉक्टर आपने हमारा ट्रीटमेंट किया था, अब वापस एक दूसरे ट्रीटमेंट के लिए आना था, आप ही करोगे क्या? So then I'm not posted in that department, but then I refer them to some other department as such. But patients remember that actually. You don't know the amount of impact we Because have with that. patient interacts only with one doctor, and doctor interact with multiple patients. So Multiple yeah, patients. Yeah. yeah, right. So it helps the patient, it helps us, and it helps the relationship as well. So it's as long as it's working, yeah, I'm fine with it. Yeah. So and the Okay. other thing I noticed is when you mentioned about the relationship and the friendship between the patient and the doctor. Yeah. So एक अलग से क्लासेस में होता है कि हॉस्पिटैलिटी करके लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव विद एन इरिटेटिंग पर्सन और जस्ट नॉर्मल पर्सन, दिस इज हाउ टू रिएक्ट और यू हैव टू बिहेव करके एक सब्जेक्ट है आपको या डेंटिस्ट या हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स में. Uh, ऐसे स्पेसिफिकली सब्जेक्ट नहीं है, बट there's a chapter called as prognosis in this sorry, in perio, or the subject that is dealing with gums. So Okay. in that we have a class of patients. I'll tell you the classification. It's excellent patients, good, Okay. fair, Okay. poor, uh, questionable, and hopeless. ओह ओके. एक रिव्यू टाइप है आपको भी लाइक दिस इज हाउ लाइक. Yeah. I mean, Semantic analysis. हाँ. Yeah, yeah. हाँ, ये इंजीनियरिंग टर्म्स का है क्या? हाँ, हाँ, हाँ. अरे मतलब ओके. देख एनालॉजी है इधर भी देख। हाँ, है ना. तो दीज पेशेंट्स मतलब इनके लिए हैंडल कैसे करें ऐसे कोई स्पेसिफिकली सिखाता नहीं। आई थिंक दिस इज ऑल टू डू विद द एक्सपीरियंस। पेशेंट से जितना ओके. ज्यादा हैंडल करो फिर समझ में आता है। आई थैंकफुली आई हैव नॉट हैड मेनी अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, आई हैव हैड सम, बट इतना नहीं होता है। आफ्टर वन और फ्यू स्कोल्डिंग फिर वो समझ जाता है, चुप बैठता है ठीक है, फिर। आई सरेंडर माय टंग टू यू. या कर देता है वो सरेंडर फिर बाद में।
No, but लेकिन this हाँ, is okay with adult patients, but like children would be a like या चिल्ड्रन आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज यार, मतलब उनसे तो वो चेयर में बैठते ही नहीं है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. yeah, for sure, correct. देयर आर वेरियस मेथड्स, मतलब मैंने ऐसे रेड अबाउट दिस, मैंने अभी किसी को क्लिनिकली करते हुए देखा नहीं है. दे टाई देम अप, रैप्स Yeah, होते हैं. yeah. तो Yeah. बहुत होता है, मतलब इट कैन बी कंसिडर्ड, इट्स बॉर्डर लाइन ऑन अ क्राइम कि बांध के रख रहे हैं पेशेंट को Slave, हाँ slavery. स्लेव की तरह. हाँ No, बट but हाँ, मतलब क्या करे ना, इट्स पेशेंट को ही सब, मतलब अगर उसको ही कुछ हार्म हो गया तो फिर प्रॉब्लम है. बच्चे स्टिल बैठते नहीं है. yeah, हम्म like ये सब children है. का तो I have had a patient once, मतलब he was a kid, he was I think 10 years old. In his whole life, he had brushed 3 times, I think. वाओ Three मतलब ही times, like मतलब 10. पेरेंट्स ब्रस्ट और ही हिमसेल्फ ब्रस्ट 3 टाइम्स है नहीं, वो पेरेंट्स नहीं किया था, आई थिंक वो 10 साल में वो बच्चे ने सिर्फ 3 बार ब्रश किया था. ओके हाँ एंड मतलब ओरल कैविटी वाज अ मेस, ऑब्वियसली पूरा दांत भी सब सड़ गया था. हम्म एंड ही वाज स्टिल फाइन विद इट, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था. ही स्टिल यूज्ड टू जंक ऑन दोस चॉकलेट्स एंड ऑल, एवरीथिंग ही वाज ईटिंग. so he comes under your Saarth's question that हाँ, ही वाज अ होपलेस केस डायरेक्ट. नहीं 7 questions like हाँ, correct, how समझा. does he care like how does he know that I have a problem so हाँ, that comes yeah. under No, वो ओके तो ओके पेरेंट्स को ओके. समझा रहेगा ना, वो तो पेरेंट्स को समझा रहेगा, सड़ गया दांत तो. Yeah. हाँ पेरेंट्स का एक्चुअली एक ही होता है यार, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं वो सुनता नहीं है. एंड नाउडेज पेरेंट्स दे वेरी बिजी. okay लेकिन ये सब चीजें देखनी चाहिए यार, मतलब एटलीस्ट दांत सफेद दिख रहे तब तक देखो यार. चलो पीले होने दो, इतना भी काले होने तक भाई रुक रहे हो तुम लोग. There's no teeth left. I don't know how the kid हाँ is eating. Correct. बचता सीधा ही नहीं डायरेक्ट कुछ. हाँ Yeah. swallow Yeah, and actually, ये doubt मैंने मतलब like I had asked Vivo when we were like together. Now I would like to raise this question here as well. कि like milk teeth मी तुला विचारलेलं ना की या yeah, like it falls off, but we don't actually experience like falling off every teeth. I have literally Every remembered like हाँ 5 to 6 teeth falling. 5 to 6 max, ना. Yeah, या. max. Yeah. So So that is something which is called as physiologic resorption. मतलब मिल्क टीथ जो होते हैं ना, एक तो वो हमारे परमानेंट टीथ की तरह 32 नहीं होते, दे आर 20 इन नंबर. yeah. कि 3 सेट्स ऑफ टीथ है. एक तो थर्ड मोलर नहीं होता है, एक फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकंड प्री मोलर. ये जो टीथ है, दे आर नॉट इन द मिल्क टीथ. मिल्क टीथ में ऐसा कोई टीथ है ही नहीं, थर्ड मोलर, प्री मोलर, एनीथिंग ऑफ दैट. तो ओके इधर 20 तो टीथ होते हैं सिर्फ, हाँ और उसमें से इधर भी तो एट्थ 5-6 क्लास में अपने पढ़ा को. सॉरी इधर सॉरी. तो 8th क्लास में पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है प्री मोलर ऐसा लग रहा बोला है क्या गया प्री मोलर? बस इधर तो Hmm. सुना है हाँ प्री मोलर इज समथिंग विच कम्स प्रायर टू द मोलर, सो प्री मोलर. हाँ हाँ Hmm. ओके. Hmm. सो ये तो 20 टीथ होते हैं, उसमें से भी अपने को मतलब 5-6 वी नो या वी सी देम फॉलिंग ऑफ, कि दांत गिर गया. The rest of them, they undergo physiologic resorption. मतलब no, we don't ओके swallow मुझे them. लगा कि But था some children even do that, but that is something which is an entirely different case. Physiologic resorption is basically something कि permanent teeth जो होते हैं ना. I wish I had an X-ray of a child यार. I would have shown you. It's very interesting. Just look it up once after this. Hmm. Erupting teeth X-ray Hmm. in a child. You can literally see the permanent teeth above those milk teeth in the bone. Hmm. You ओके know, so when these teeth they erupt from beneath the milk teeth. What they do is they cause, this is a physiologic process or a natural process. There are certain osteoclasts, and osteoclasts are basically cells which cause eating. In Okay. very layman terms, they are Hmm. causing eating of the Hmm. cells. So slowly and eventually, as the permanent teeth is growing or it's erupting into the oral cavity, it will cause slowly and steadily the resorption of the milk teeth. So they just vanish into thin air, which you can put it very simply. It's not something I would say usually, but something for you to understand. Hmm. Yeah. ओके So milk teeth, they undergo physiologic resorption. They just go there, and the permanent teeth, they appear in your oral cavity. Okay, so तो हाँ, ओके हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ. Okay, so the 20 teeth are basically front and थोड्या दाढी असतील आपल्या.
दाढ असते ती. And what are the remaining 12 teeth that are new? Like wisdom teeth are counted in that? Yeah, matlab, in the permanent teeth, we have 32 permanent teeth, right? Ideally, not all of them have wisdom teeth. Some wisdom teeth don't even erupt, or some of them don't even have a wisdom teeth. Hmm. So including the wisdom teeth, it's 32. So if you exclude that, then obviously it's 28. And premolars, two premolars on each side, so four of them. So Hmm. it's eight premolars in total. So if you deduct that again, then it's 20. Correct. Yeah. Correct. Yeah. Yes, sir. Yeah. So apart from that, I would like to ask you now, like you're in your final year. Now, what are your plans for the, like, what specialization you want to do in this? Actually, I've, I mean, I've known this about myself. Ki, there are certain fields that I've been interested in. There's not one specific field, and I've really shown. I know I like orthodontics. I like prosthodontics. There's something I've been considering, which is pedodontics or pediatric, छोटे हम्म बच्चों का. हम्म And बस finally, तू there's हंस oral. मत भाई, मुझे समझा तो क्यों हंस रहा है. हाँ, you Okay. continue. Yeah. नहीं, फिर मुझे भी वो रैप करना पड़ेगा बच्चे को, नहीं स्लेव बनाना पड़ेगा. you didn't get his joke. हाँ मी तुला नंतर सांगतो तो. अच्छा, हाँ, तू ओके ओके, पेडियाट्रिक हाँ बोला बस वो इसलिए आ बस गया. वन वर्ड बस पसंद आता है बस. ओके ठीक है. कंटिन्यू. पेडियाट्रिक अच्छा लगा ना वर्ड. हाँ You प्रोनाउंसिएशन continue. लाइक पेडो पार्ट. हाँ हाँ. भाई पेडियाट मेरे को पीडो बोला इसलिए साला झोल हो गया सब. पेडियाट्रिक डेंटिस्ट बोला वा सर. इफ आई एवर बिकम पेडियाट्रिक डेंटिस्ट, हाँ, आई हैव yes, टू yes. कॉल पेडियाट्रिक डेंटिस्ट. मी यस डॉक्टर ऑटो बोलणार करंट भाई. हो गया वो. मी डॉक्टर हाँ बोलणार आहे भाई. माझा अरे यार, मित्र वो आहे तो मत जाता बोल तो यार. डॉक्टर आहे बस. दैट इज होल अनदर फियस्को. साला डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं बुलाएंगे करके देयर इज अ होल डिफरेंट काइंड Yeah, ऑफ. हाँ यार there's a whole hangover. different debate between those two. Yes, हाँ. Yeah. I'll be Like, frank with you, you know, मतलब एमबीबीएस से एमबीबीएस जितना पढ़ाई नहीं करते हम लोग. I feel that way. I don't know about the rest of them. This is my personal opinion, but I would have been crushed, yeah, if I would have gone into MBBS. मतलब गोल तो वही था. I came into BDS, but eventually I feel this is something I have been able to do quite fairly. MBBS थोड़ा difficult हो जाता है. It's so many subjects. It's so much of, you know, बहुत पढ़ाई होती है and all that. So yeah. No, But no, but यार डॉक्टर बुला लो यार. no, डॉक्टर no, no, मत. no, no, no. You deserve to be called doctors because that day when I was talking with him, he explained me about his subjects and like number of subjects and whatever is the content in those subjects, and that's not easy. Like we imagine like studying about teeth is just structure or like basic care and a few surgeries, but it's not like that. There are a lot of things to study. So yeah, they deserve to be called doctors. First of all. Thanks यार. Thanks a lot. Yeah. वैसे स्टैंड अप में एक क्लीशे एक जोक तो आता है, यू डॉक्टर और डेंटिस्ट करके. तो यार No, no, no. तो ये Save all the भेदभाव. dentists. हाँ Hashtag. ये भेदभाव की. हाँ. So वीडियो में ये भी डाल देंगे. one personal question that Yeah. concerned about the challenges. So any specific challenge that you overcome while you are operating on a live patient? So एक करते At समय some ऐसा point, ब्लड आ गया और पेट में को थर खापा. So overcoming that. So any aspect that. you know, I'll tell you this. We've been taught this from the first year when we were not even handling patients. कि patient के सामने ना डरना नहीं है. Everything is treatable unless it's a very terminal case. But patient के सामने डरना नहीं है. क्या है patient? If he sees your fear ना, then the fear that he feels is something, you know, it's on a different level. क्योंकि he's पूरा मतलब सौंप दिया ना कि आपको कि करो यार. मुंह पूरा खोल के ऐसे बैठा वो बेचारा. और आपके चेहरे पे उसको फियर दिख गया तो फिर वो मतलब उसकी पूरी फट जाती है. So that is the one thing that is to be always you know, kept in mind. And the next thing is you have to become, I won't say exactly it's like that, but you have to become a little fearless at some point. कि आने दो यार पेशेंट जो भी है. Because we, you know, teachers tell us कि भाई. So it's every time, not every time, but most of the times your answer has to be yes. कि हाँ मैं करूँगा. I don't know if I will be मतलब surely and ये कर ही पाऊंगा. Teachers are there to help you and all that, but you have to become fearless. Yeah.
मतलब अनलेस यू डू इट तो जमता नहीं, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, योर कॉम्प्लिकेशंस देन रिड्यूस, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स कि पेशेंट के सामने ये फियर दिखाना नहीं एंड ऑल दैट थिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज सब कुछ प्रिवेंट हो सकता है, सब कुछ ट्रीट हो सकता है, अनलेस इट्स अ वेरी वेरी टर्मिनल केस. Hmm. Yeah. So any improvements have you seen in the treatments, like instruments wise? Yeah. और I was in अभी का, हाँ. I was for 2 weeks. I was in Konkan actually. It's my Hmm. native place, and I was actually hoping to get a mass crowd of patients. जैसे जो practice चलता है ना उधर Hmm. रूरल एरियाज में. इट्स वेरी बेसिक हाँ. ट्रीटमेंट्स होते हैं, फ्री ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैंप्स होते हैं. सो Hmm. आई वाज होपिंग फॉर समथिंग काइंड ऑफ दैट, बट व्हेन आई वेंट देयर, it's my uncle stays there actually, and his best friend is a dentist. He's been practicing for 25 years, Dr. Abhijit Apte. He's a great guy. Uske clinic mein I was going for 2 weeks. I was just the observer there, but the amount of instrumentation, the armamentarium, and the materials he's using, it's all German and French materials, but they are working on a different level. Yeah, मतलब altogether different level. उधर Hmm. bone grafting भी चलता है. You heard of this bone grafting? मतलब. No. So basically, जहाँ पे they are regrowing bone in places where bone has been destroyed. Oh. Oh, Bone okay. regrow कर रहे हैं. Mm-hmm. These हाँ, are हाँ. I don't know if you heard of stem cells. ऐकलंय Yeah, साठ yeah, yeah. कधी? Oh, stem cells ऐकलंय. Oh. The Hmm. pluripotent cells होते हैं, मतलब they can regenerate almost everything that is in Mm-hmm. the Like liver. ते like something मला एक्झॅक्ट नाही माहिती बट मे बी बोन मॅरो वगैरे मध्ये पण असतात आय गेस. या एक्झॅक्टली या स्टेम सेल्स असतात. स्टेम सेल्स आर अपने बॉडी में भी होते हैं, या एंड ये मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से भी डिराइव्ड होते हैं. सो दीज गाइज आर डूइंग दैट आल्सो. सो आई Hmm. वाज होपिंग फॉर समथिंग एल्स, बट यहाँ पे मुझे करने का कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिला. मतलब आई डिडंट गेट टू प्रैक्टिस, बट समथिंग व्हिच आई ऑब्जर्व्ड वाज वेरी डिफरेंट यार. मतलब dentistry has gone to a whole different level. Absolutely. The हम्म. X-ray machines they were using, like they were like guns, handy machines एकदम ऐसे हाथ में ही लेते थे. They used to click one trigger, ऐसे pull करते थे, and the whole digital image of your X-ray used to be projected on your screen. Oh, It's okay. बहुत एडवांस हो गया डेंटिस्ट्री तो. ये सब देखे एक्चुअली, बिकॉज द थिंग्स दैट हैव बीन डूइंग इन माय कॉलेज, दे आर सो ऑब्सोलीट. आई मीन हम लोग मटेरियल्स भी जो यूज करते हैं वेरी वेरी बेसिक ना. सो यहाँ पे जो सब कुछ देखा, आई फेल्ट कि मतलब दैट मोटिवेटेड मी कि चलो भाई अभी तो करने का ही है. Hmm. अब तो because for this I want to now jump into the whole clinical practice of it all. Hmm. क्योंकि if it wasn't for this तो फिर मोटिव इतना नहीं था. I was maybe thinking कि कुछ रिसर्च करूंगा and all that, but this astounded me really. डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया अभी. Hmm. सेफर हो गया है, पेशेंट फ्रेंडली हो गया है, एंड नाउ दिस न्यू advent of preventive and aesthetic dentistry has come into being. People are very conscious about their smiles and all ना. करेक्ट या. Hmm. तो वो सब बहुत कंसिडरेशन में लेते हैं आजकल. इट्स और बिकमिंग ज्यादा फॅशनेबल नेचुरल एज वेल. प्रिजर्वेशन होता थोडं है. फॅशनेबल साईडला पण. नेचुरल प्रिजर्वेशन इज ऑप्टेड फॉर. मतलब जितना नेचुरल स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर सकते हो तो उतना प्रिजर्व करो. ऐसे खड्डा बस करना नहीं है फिलिंग करने के लिए. जितना हो सके उतना ही निकालो, फिलिंग कर दो, सील इट ऑफ. नेचुरल प्रिजर्व करने के. Hmm. या. नेचुरल इज बेस्ट यार. उससे मतलब उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं. हम्म. या दैट. So one question again, as maybe it's a silly one. Uh, there's a birth of AI, so it's taking the jobs of most of the engineers right now. So how is the impact of AI in the doctor side, in the dentist side of it? I actually heard of this. I don't know if it's completely based on AI, but have you taken your grandparents to a dentist, or have you heard of it? Like before making a denture, कवड़ी जो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, जूट के दांत, हाँ हाँ हाँ. डेंचर होता है ना, हम्म. वो बनाने से पहले ना द डॉक्टर हैज टू टेक एन इम्प्रेशन. Yeah, करेक्ट. yeah, yeah. हाँ. Clay type ऐसे एक रहेगा. मटेरियल लेते, ट्रे में लेते कोई मटेरियल, वो ऐसे हाँ. डालते हैं अंदर और रख हाँ. देते हैं ऐसे ट्रे में. Okay, they say to तो पूरा ऐसे bite. माप आ जाता है वो. हाँ. करेक्ट करेक्ट वहां पर करेक्ट. मतलब पूरे दांतों का उसमें वो फिर मटेरियल भरते हैं, उस पे वो काम करते हैं. सो हाँ. द न्यू टेक्निक विच हैज कम इज बिकॉज दिस इज यूजुअली प्रोन टू रॉन्ग हो जाता है वो इम्प्रेशन, क्योंकि हम लोग ही करते हैं ना, ऐसे ले रहे हैं अच्छे से नहीं होता है, कभी कभी मटेरियल अंदर से अच्छा. वीक हो जाता है, जो भी होता है.
प्रॉब्लम बहुत होते हैं. सो नाउ देव कम अप विद दिस थिंग कि पूरा स्कैन होता है. मतलब दे कीप द पेशेंट ऐसे चेयर पे और अंदर से कोई वो एक इंस्ट्रूमेंट है, आई थिंक इट यूजेस एआई, वो पूरा ऐसे बस एक रख देने का एंड यू जस्ट लीव. वो पूरा स्कैन करता है एंड यू गेट अ 3D मॉडल ऑफ योर एंटायर ये, और वो 3D मॉडल को रीजनरेट करता है इनटू योर 3D मॉडल्स हार्ड में. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड. बट हाँ, so एज basically फार एज 3D टेकिंग printing फॉर टाइप जॉब्स, प्रकार हो रहा है, हमारे मेरे को 3D लग रहा है. प्रिंटिंग टाइप, या 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 मतलब जो वर्चुअल मॉडल्स है उसको वो क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट इज हम्म. कंप्लीट मतलब कंप्यूटर बेस्ड. आई Correct. डोंट थिंक इट्स एआई, बट No, it's not as far AI. as Yeah, I know, it's like heavy use of technology. Yeah, you can say. या बट ये सब है एआई का. आई डोंट थिंक सो. मतलब एज फार एज No, टेकिंग ओवर जॉब्स इज कंसर्न, आई डोंट थिंक इतना कर no, पाएगा. AI means like it can be like a case where there is a small, let's consider there is a filling we have to do. So like there is no need of a doctor. Like some certain kind of a machine can do that. If that is possible, then it means that AI is like this is one of the application we can say something like that. Right. So yeah, but I I don't think that have is certain second thoughts on this basically, but yeah. yeah, okay, maybe. मतलब I've seen dentists work यार, मतलब accomplished dentists. उनका there are so many things to be gauged about, right? So Hmm. many things to be thought about. It's the case keeps constantly changing as you go deeper and deeper into the tooth structure. As you keep drilling, now you see कि अच्छा lesion इतना इतना deep है तो इतना ही जाना है, इतना ही जाना है. AI does what it has been told, right? Mostly. Yeah, correct. Yeah. AI does what it's been told. डेंटिस्ट का जो खुद का माइंड होता है ना, द वे इट परसीव्स Instinct. थिंग्स, हाँ. इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो भी होता है, मतलब it's constant change of decisions while going deeper, क्योंकि सब कुछ तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझ में आता नहीं है. द पेशेंट हैज टू गो एंड सी क्लिनिकली कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सो Oh. दैट इज समथिंग आई थिंक एआई फिलहाल तो कांट रियली टेक ओवर. मे बी इन द फ्यूचर, या डेफिनेटली वो Hmm. भी एआई कर लेगा. Yeah. Okay. No, but So. whatever wherever there is a human touch, there is perfection. That is a different thing. Yeah, but yeah, yeah. That is, Continue. I One think it applies in all cases, even in your Yeah, case, yeah. Everywhere. which is Yeah, very, very important. Yeah. yeah. So one thing I noticed is there's a term called sorry, I forgot. Retirement type. Sorry, the retirement concept. So Okay. software or any engineering side, there's a term called retirement. So after 60 years or above 60, you have to retire from the job. Right. So I don't think doctors में ऐसा है ना, like retirement type. So they can work I as think long as they can serve. जनरल फिजिशियंस में इतना नहीं है, क्योंकि उनका तो मतलब आई माय ओन फैमिली डॉक्टर ही इज 75 समथिंग, Oh, काफी okay. ओल्ड है, एंड ही गॉट दिस पार्किंसंस डिसीज भी उनको. ही इज फेयरली ही इज सिक थोड़ा, मतलब बट ही स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड ही मतलब उसके मेडिसिन भी अभी अभी तक अच्छे हैं, उसके डायग्नोसिस अच्छा है. बट एज फार एज डेंटिस्ट आर कंसर्न, आई थिंक प्रैक्टिसिंग होता है ना उसमें यार, बहुत क्लिनिकल प्रैक्टिस. There should be like आफ्टर अ fast व्हाइल योर movements also. हैंड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग एंड ऑल, Yeah. तो मतलब उतना नहीं, मे बी नहीं. Basically और वी कैन because it goes on the surgery side as well. म्हणजे सर्जरी आहेच ना म्हणजे. Yeah. Yeah. एग्जैक्टली. बट आई सीन डॉक्टर्स मतलब 60s, आई थिंक 60 इज गुड. उसके बाद So द you डेंटिस्ट इज support, सो वेल right? You सेटल्ड. support the concept. You support the concept called retirement. Like, भाई 60 के बाद तो मैं खुद ही रिटायर हो जाऊँ यार. रह जाओ यार, हम लोग को चांस तो दो, लाइक हम लोग को भी एक्सपीरियंस या बनने तो दो, लाइक हाँ. exactly. I'll maybe, if by God's good will, if I have a clinic of my own, I'll hire a dentist to run it. Yeah, I'll sit at home, मजे करूंगा मैं. Okay. हाँ. Yeah. या मतलब उतना तो है ही, मतलब 60 तक तो इज फाइन. आफ्टर आफ्टर दैट आई डोंट थिंक एटलीस्ट क्लिनिकल में इतना घुसना चाहिए. साइट थोड़ा अपना मतलब आई साइट भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. Yeah. ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यार. हम्म. एक्सपीरियंस के बारे में तो मतलब है ही नहीं कुछ, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन फॉर दीस गाइस है. 60 इयर्स ऑफ मतलब 60 इयर्स का आदमी है, 30 साल प्रैक्टिस कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस का तो मतलब यू कांट इवन Yeah. कॉम्प्रिहेंड कि क्या एक्सपीरियंस है बंदे का. हम्म. Yes. But in terms of practice, I'll maybe go into academics and that sort of, Yeah. Yeah. Okay. You can be a professor or something like that. listen. That's So I way think boring है. उससे अच्छा तो मैं घूम लूँ थोड़ा सा. Yes. I think we can end the session because एक entertaining session तो हुआ, like No, no, no. conversation. Like here, like
this was something that everybody should know, and Yeah. like this is a general knowledge basically, and Mhm. yeah, like it was a very insightful session. Yeah, Kaustubh, yeah. Yeah. I'm I happy. think Yeah. we can end the session with last question, that is, what motivates you to get up early in the, get up every morning and see a stranger's teeth? So what is the motivation? Sorry. Uh, your passion for something that is going to be your life. Yeah. Hmm. मतलब we as teenagers of today, I have noticed this because obviously I experience that also on a daily basis. We are very apprehensive कि अरे यार बोर हो रहा हूँ यार, मतलब चलो हर रोज यही चल रहा है. I'm doing Hmm. this over and over again. कितना करूँ यार? But after some point you have to tell yourself कि चलो भाई अब डाल दिए मेहनत. If this is going to be my life, then I have to work for it यार. Hmm. Or if I have to work for it, then I have to develop a passion for it. So I Hmm. started finding out some things which are interesting to me in dentistry. Oh, okay. इसीलिए when I went to Kokand and all that, na, that the main motive was that to find something which motivates me about this. Hmm. Correct. So I'll tell you, up until second year, I was very apprehensive यार. मतलब एक तो मुझे MBBS करना था, I went into BDS. क्योंकि you know NEET is very difficult. वो जो entrance exam है ना, to be Hmm. very frank, what difficult है. My score wasn't up to the mark, so I went into BDS. So all that was there. Second year तक we didn't get to handle patients, बहुत theoretical हो जा रहा था. And then in third year when we got patients, workload इतना pile up हो गया कि I was stressed under that. And fourth year everyone used to say कि यार ये तो मर ही जाएंगे तुम लोग, मर ही जाओगे पूरा, इतना प्रेशर होता है. 8 subjects we have in fourth year, बहुत सारे subjects है. बट फोर्थ ईयर वाज द मोस्ट अमेजिंग ईयर ऑफ माय BDS यार. मतलब इतना काम था ना कि आई यूज्ड टू स्टार्ट एंजॉयिंग द वर्क. एंड Hmm. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट ना, Hmm. फिर कि यार ये जिंदगी में यही करना है यार. इसके अलावा Hmm. तो कुछ और हो ही नहीं पाएगा मेरे से. मतलब आई 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 टोल्ड सार्थ ऑल्सो, आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. बट हम लोग क्या होता है व्हेन वी आर अ बिट यंग, वी स्टार्ट ऑफ थिंकिंग दीज थिंग्स एज प्रोफेशन, एंड इट शुड बी अ प्रोफेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट इट टुक मी अ व्हाइल टू रियलाइज कि यार जिंदगी में मैं तो यही कर पाऊंगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. Correct. Hmm. No, मतलब no, if we are and talking about 30 years, right? So yeah. if 30 years का मेरा ये this is going to be my life, I have to have a passion for it. I Hmm. have to love it. अगर if I have to get up in the morning, तो I have to know कि यार मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, not for my parents. Parents तो बहुत support करते हैं यार, लेकिन Wait. unless you start loving it for yourself ना, तो nothing will motivate you यार. Yeah, कितना but ही motivate. like you mentioned about your entrance, हमारा भी same scenario था. We gave JE, we were fucked, and then like but once The now. rank was bigger than my phone number. Like, अलग ही चला No, गया no, अलग no. digits. Same here भाई. No, but Hmm. once like even in my case after around second third year, even my like what I have to do ahead, like I was very much clear because like once we dive into something, then it's like we enjoy the swimming then once we dive into the, yeah. Yeah, so Hmm. no, but the way डाई you भी बहुत नेसेसरी होता है. डाई भी नेसेसरी है. द yeah फर्स्ट yeah स्टेप. yeah Hmm. फर्स्ट like स्टेप The इज jump, एवरीथिंग. the yeah push. yeah and the way you explained it today and you like the way you were talking about this, the like we both can see and observe the passion and the interest that you have developed. So like Hmm. थैंक्स. you went technical दिस as वाज द हाईलाइट. well. जबड़ा. No, Yeah, no. yeah, the broken tooth also broken today. that I The left lent it to side. my friend यार, उसको चाहिए था. Oh, Okay. yeah. So great session. Yeah, Great session. hope to do more like on If different possible, we topics. can also make a story. I mean, sorry, a podcast on a story writing or anything that you mentioned. ये भी करेंगे ना यार. Yeah, yeah. करेंगे. So So thank you all. Yeah, Thanks for thank you having for me. listening, bro. Thank you for listening and thank you for the session. It's yeah. a very cool session with we entertained ourselves, but as well. Share, subscribe and क्या बोलते हो? Like, share, subscribe, and comment to the fact. Yes, yes. Thank you everyone. Yeah.